10-15% डालो उसमें, तो 15% में तो कई 200% मिल जाता है। ये कच्छा मारवाड़ी का धंधा है। क्या करे अरविंद, ये पटेल लोग को नहीं आया। पटेल लोग तो सर देते भी है और सर ले भी लेते हैं। ऐसे है ना। तो એટલે આવું છે એમને તો બધા જાણે. એમને તો ત્યાં જાલોરમાં બહુ બહુ લોકોના કામ બહુ કર્યા, દેરાસરના લોકોના, મારા આચાર્ય સાહેબના બધાના. अरे अपना अच्छा इसको सारा फैमिली को ज्ञान दिया है. जीतू एक ऑर्डिनरी फोटोग्राफर था, उसकी स्टूडियो ये उसका जूनियर तैयार हो रहा है, वो भी तैयार हो गया. और उसका घर में उसकी धर्मपत्नी को, बच्चों को, सबको ज्ञान मज़ा करते हैं लोग. बिल्कुल आज आने वाले हैं. हाँ, अरे आज हॉल में जाना है. अच्छा ठीक है, तो व्यवहार संभालना ही चाहिए. पहला व्यवहार संभालेंगे तो मोक्ष अपना पक्का हो जाएगा. सामने नजीक बेसाड़ो मारी तलक्षी, तमे बेसो, मारी जोड़े अहीं बेसाड़ो एमने. તમે ત્યાં જતા રહો. આવો અહીંયા અહીંયા આવો. અહીંયા સાહેબ તમારા માટે ખુરશી રાખી જ મેં. મહેતા સાહેબ આજે ગુજરાતીમાં બોલીશ જરા. તો ઇતિહાસ એટલે શું મહેતા સાહેબ, કે ભૂતકાળમાં બની ગયું તે ઇતિહાસ કહેવાય છે. હાસ એટલે જેનો હરાસ થઈ ગયો. હરાસ, હરો, હરો એટલે ક્ષીણ ક્ષય થઈ જવું. ઇતિહાસ, ઇતિહાસ બોલતા કોઈને ફાવે નહીં, એટલે પછી એનું ઇતિહાસ થઈ ગયું, અપભ્રંશ. ઇતિ ઇતિ વદમ શું કહ્યું? એટલે શું? આમ ભગવાન બોલ્યા હતા. ભાનુબેન સંભળાય છે કે? તો તમને અહીંયા ખુરશી બીજી મુકાઈ દેવી પ્લાસ્ટિકની. હા ચાલશે. એવું છે પંડ્યા સાહેબ, સાંભળ્યું? ઇતિ વદમ, ભગવાન આમ બોલ્યા હતા. પણ ભગવાન બોલતા આવે તો કોઈ સાંભળે નહીં આપણને એમનું. આજે ભગવાન હાજર હોય ને મુખેથી બોલે તો એમની વાણી કોઈ સાંભળે એવું નથી. સાથી કારણ કે આપણા કાન એટલા બધા ટેવાઈ ગયેલા છે કે ભગવાનને સાંભળ્યા હતા એમ જ ટેવાઈ ગયેલા છે ને એમ જ ગમે છે. કારણ કે આપણને ઇતિહાસ અને ઇતિહાસ થવાનો છે એવો ભવિષ્યકાળ એમાં બહુ રમમાણતા છે. હજુ પુણ્ય અને પાપથી છૂટ્યા છે, છતાં પણ ન પુણ્યના પક્ષના કે ન પાપના પક્ષના, બેમાંથી એક પણ પક્ષના નહીં. અમે વિતરાગ મત અને વિતરાગ પક્ષના છીએ એ ના રહ્યું. અને એ વિતરાગ વાણી આજે મળે, એ વાણી સંભળાય આપણને તો આંખેથી દેખાતું, કાનેથી સંભળાતું, જીભેથી વદાતું, એમાં હું કેમ કરીને રહી શકું? આજના ભગવાનની દેણ આ દાદા ભગવાન મારફતે આજના ભારતવાસીઓને મળી ગઈ. વ્યવહાર કોન્ટ્રાક્ટર હતા, મારા ફ્રેન્ડ, ફિલોસોફર ને ગાઈડ, અને મારા ભગવાન પરમાત્મા. કોણ છે? અંબુભાઈ, તમને ઉપર ભાવશે કે નીચે ભાવશે? ઉપર આવો આવો આવો. નહીં નહીં, તો મોટા ઉંમરનાને તો એવું જ રાખીએ જ છીએ, વ્યવસ્થા હોય છે. એ બધા મોટા ઉંમરના બધા વિનય કરે. મહાત્માઓ એટલે વિનય ધર્મ તો પહેલો શીખી ગયેલા હોય બધા. કારણ કે વિવેક તો સંસારમાં જોઈશે ને, કારણ કે એકબીજાની જોડે રહેવું પડશે ને, નહીં તો સંસારમાં સમાજમાં આપણે હળદૂત થઈ જઈશું. ઘણા ને બધા આજનું જીવન જ બધું એવું થઈ ગયું છે ને બધું જ્યાં ત્યાં.
અમારા ચોખ્ખા બ્રાહ્મણના બ્રહ્મદેવ છે એમને ના થાય. રણછોડરાયજીનું બહુ મહેતા સાહેબ ત્યાં ડાકોર બહુ પેલા પંડ્યા સાહેબ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ રિટાયર્ડ અને આપણે સંઘને સેવા આપે બધું. આ બધા જ વ્યવહારમાં છે અને વ્યવહારમાં એકને પણ ઈચ્છા નથી રહી, ઈચ્છા નહીં રહી, બિલકુલ નહીં. એનો અર્થ એવો નથી કે આ વ્યવહારમાં ઘરના સંબંધો, બચ્ચાઓ, પોતાના ધર્મપત્ની એની સંભાળ નથી કરતા, બધાની કરે છે. પરંતુ વ્યવહાર રહ્યો કેવો? તો કે સુપરફ્લુઅસ, ઉપલબ્ધનો. મહાવીર ભગવાન જન્મથી રાજમહેલમાં જન્મ્યા, 30 વર્ષ લગ્ન થઈ ગયું, બચ્ચી થઈ ગઈ અને લગ્ન કર્યા, દીકરીના લગ્ન કર્યા મહાવીર ભગવાને. છતાં એ બધામાં કેવી રીતે વ્યવહારથી રહ્યા? અને જ્યારે વ્યવહારથી બધું જ પરવાર્યા, પરંતુ માતા પિતાના પ્રેમથી નહોતા પરવાર્યા. કારણ કે માના એમને ગર્ભમાં જ એમને નક્કી કર્યું હતું કે મારા માતાને આ ભવમાં, આખા ભવ દરમિયાન ક્યારેય પણ મનથી, વાણીથી, કાયાથી જરાક પણ એક સ્પંદન જેટલું પણ દુઃખ પહોંચે એવું મારાથી ન હોય. ત્યારે માતા પિતા કહે છે કે હવે મારી દીકરી આ તે બસ મારો સમય આવી ગયો છે મને, તો કે છે છતાં બધાએ આપી. પણ માતા પિતા પરવારી ગયા હતા, એમના કાળ થઈ ગયો હતો માતા પિતાનો. ત્યારે મોટા ભાઈ આવી એમને વિનંતી કરે છે કે 2 વર્ષ તમે રોકાઈ જાઓ. તો મોટા ભાઈ છે તો મોટા ભાઈનો એટલો જ એમનો વિવેક અદ્ભુત હતો કે આખા સંસારમાં આપણે ફોલો કરી શકીએ, આપણા સંસારના સંબંધોમાં આપણે ભાઈઓના પ્રેમમાં ફોલો કરી શકીએ. નહીં તો આપણે ભાઈ શું છે આજે વેરી બની જાય છે એકબીજાના, કાપે ઉડતી. પેલો એક વકીલ કરે તેનાથી ડબલ વકીલ મોટો કરે, જા તક કરો. આ કઈ જાતનું સંસારમાં એકબીજાના વેર વધે એવો તો ધર્મ હતો હશે? સંસારમાં અંદર ઘરમાં અને ઘરના સંબંધોમાં એકબીજાના વેર વધે એવું તો ધર્મ હોતો હશે? અરવિંદા तलक से ईसा बोलता है, हाँ तो ईसा मत बोलो. रमेश क्या बोलता है? कच्छ में क्या बोलते हैं? बोलो ने. लेकिन घर के संबंध में नहीं, कि घर के संबंध जो नहीं है उसमें तो थोड़ा तो रखना चाहिए ना. मैं रमेश क्या बोलता है? तू समझ गया मेरी बात? बस पक्की समझ ले बच्चे. जयंती भाई साहब आए, आप समझते हैं? आप उनके मित्र हैं ना, तो दोनों अच्छी ढंग से समझ लो, मुझे ज़्यादा न समझाने पड़े. हाँ हमारे धर्म की बात, કોઈ પણ ધર્મની વાત હોય તો આપણા આ દેહના હિતમાં જ હોય, ઘરના સંબંધોના હિતમાં હોય. અને ઘરના સંબંધોનું હિત જળવાયું તો તમારે દુનિયામાં, સમાજમાં કોઈનું અહિત ક્યારે નહીં કરી શકો. તમે જોજો, આ મને દાદા ભગવાન આવી રીતે સમજાયેલા હતા અને એમનું જીવન આ રીતે જ ગયું હતું, આ જ ગયું હતું. હું તો મહાત્માઓને કહીશ કે મહાત્મા જોડે મહાત્મા છે તો મહાત્મા જોડે મહાત્મા સંબંધથી કેવી રીતે મન, વાણીને કાયાથી કોઈ પણ પ્રકારે ગમે તેવા સંજોગોમાં કર્મનો ઉદય પણ હોય તો કેવી રીતે હોઈ શકે? મને કહો, આ વાત અઘરી છે સમજવી? સમજાતી કેમ નથી? હજુ એ ચીકણું રહ્યું છે, ચીકણાશ રહી છે. पंडिया साहब कुछ एनालिसिस करो, यहाँ रिसर्च निकालनी, रिसर्च यहाँ करो. जीवन બહુ મૂલ્યવાન છે, એક એક શ્વાસ કિંમતી છે આપણો. ભારત ભૂમિમાં જન્મ થયો છે આપણો, નહીં તો રાજસ્થાનની ભૂમિ તો કેટલી અદ્ભુત છે. અમે તો ખુશ થઈ ગયા છીએ એના પર. બધે જઈએ છીએ, બધા લગભગ ઘણા ખરા. ઈસ્ટ રાજસ્થાનમાં નથી જવાયું, વેસ્ટમાં તો બધે જ, ઠીક નોર્થથી બધે જ. તેમાં જોયું એ જે મુશ્કેલીઓમાંથી એમના જીવન ગયા છે તેનું આ પુણ્ય, તો ધર્મમાં આ કર્યું એના આ પુણ્ય લણે છે બધા.
શું આજે એ ધર્મનું સાચી સમજ મળે તો એ જ જીવો આખા ભારતનું કલ્યાણ કરશે. આપ સમજો છો? એના માટે પોલિટિક્સની, આજના પોલિટિક્સની, રાજનીતિની જરૂર નથી, પરંતુ વ્યવહારની ધર્મયુક્ત નીતિ અને વેપાર મુક્ત ધર્મ નીતિ, આ બે કામ કરશે એ રાજસ્થાન જ આપી શકશે. आपके जालोर में हम आएंगे, ले जाएंगे आपको, सबको ये बात बताएंगे. ले जाएंगे. हाँ, जालोर तो बहुत बड़ा है, अच्छा है. सरोज बैठी है. हाँ, कौन? सरोज. सरोज बैठी है? तू समझी? बच्ची बैठी तेरी? ना, उसको वहाँ बैठने दे. चल बैठ बैठ. तू सुनती है मेरी भाषा? बैठ बैठ. ના તો ચાલ, એ તો મને મેં એને બનાવ્યું. મેં કહું ખર્ચને પૈસા ક્યાં જોડે લઈ જવાના હતા, બધું બાંધીને લઈ જજે. નહીં તો એક હીરો હોય ને, જીભ નીચે દબાઈએ તો જાય જોડે. એક કેરેટનો. ના પછી મેં કહ્યું કે હવે હવે આટલું છોકરાઓમાં છે, જરા સુખી થાય એવી રીતે જીવો ને જરાક સારી રીતે. ના હવે અહીં સારી થઈ ગયું, બધા સારું થયું. ના ત્યાં દેશમાં બી જવું જોઈએ થોડું. હા એ જાય, જશે જશે જશે, ધીમે ધીમે જશે. સરોજ સમજ, દેશને નહીં ભૂલો કોઈ દિવસ, વતનને ના ભૂલો. તારા મમ્મી કેટલું કરે છે, આ ઉંમરે કેટલું ફરે છે. નાખોડામાં એમને બહુ કહ્યું કે તમે આવો આવો, કે ના મારે તમારે પોલિટિક્સમાં નથી પડવું. નાખોડામાં એવું થઈ ગયું છે આજે. શું કરે? કારણ કે આ પુષ્પાબેન ચોખ્ખા બિચારા, દિલના બહુ ચોખ્ખા છે. મેં મારી સાથે ફર્યા ને થોડું, બધા એમને ધર્મનું તીર્થનો ઉદ્ધાર ને બધું થાય તો બહુ ગમે એમને, સારું છે. એના મમ્મી એટલે આવું છે સાહેબ. રાજસ્થાનમાં કચ્છી માડુઓમાં જે તકાત ને હિંમત છે ને, તો કોઈ નજર નહીં ઉઠાવી શકે. અને પંજાબ, આ ત્રણ, આજે પંજાબમાં અમે મહેતા સાહેબ અમે જઈએ છીએ. પંજાબ, ચંડીગઢ, લુધિયાણામાં કુપકુલ્લા, મલારકોટલા, ત્યાં ગયા હતા આચાર્ય શિવમુનિ પાસે. તમે કહું કે અમેરિકા જઈએ છે, 3 દિવસ મળી આવું, પછી ક્યાં વિહાર કરશે ખબર નહીં. આચાર્ય શિવમુનિ સ્થાનકવાસીના છે, આપને ખ્યાલ નહીં હોય. બહુ મોટો શ્રમણ સંપ્રદાય છે. શ્રમણ તો 3 દિવસ સત્સંગ કર્યો, ખૂબ આનંદ આવ્યો અમને. પછી અમે નીકળ્યા. પછી જે કુંભકુલામમાં આ મોટું ક્ષેત્ર બનાવ્યું છે, એના વિમલ મુનિ આચાર્યજી આજે 84 વર્ષની ઉંમર છે અને છેલ્લી પથારીમાં હતા. કહે છે કે બાજુના જ ગામમાં છે, એ કુંભકુલાના જ છે એમનું જન્મસ્થળ. તો મને વિનંતી કરી કે જરાક આપ જાઓ. તો આચાર્યજી નહીં આવી શકે, પણ એમના જે નીચેના શિરીષ મુનિ હતા મહારાજ, એ વિહાર કરીને ગયા 2 અને ગયા 3 સાધ્વીજીઓ હતા. એક સાધ્વીજી MBBS હતા અને બીજા 2 એમને નિશ્રામાં હતા જોડે. એ આચાર્યજીનું સાર સંભાળ કરે. એ 4 દિવસથી બોલાતું નહોતું, જાગ્રત પૂરા હતા, કારણ કે દિલના બહુ ચોખ્ખા આચાર્ય. એમને સમાજ સેવાનું એટલું બધું કામ કર્યું છે, પુષ્કળ કામ કર્યું છે, પુષ્કળ કામ કર્યું છે. એ આચાર્યજીનું આ કુપકુલાનું ક્ષેત્ર. ત્યારે આ જન્મ હતું એટલે કુપકુલાવાળા એ બધા પંચાયતને બધા થઈને એમને જમીન વરગાડી કે અમારા આ છે, અમે તમને આપીએ છીએ, તમે એનો ઉદ્ધાર કરો. એટલે લગભગ 60-70 એકર જેટલી જમીન આપી દીધી. અને આમ બીજી બધી બહારની આપી તો પછી બીજા બધાએ આપી. એમ કરીને તો 150 એટલી જમીન છે, બધી બહુ મોટી જમીન છે. એમાંથી લગભગ 40-50 વીઘામાં આપણું તીવરી ક્ષેત્ર છે ને, એ એટલું જ મોટું એ તીર્થ આખું વસાવ્યું છે. એમાં ક્ષેત્ર છે. અમે ગયા હતા તો એમાં એમને RCC કોન્ક્રીટનું ઘુમ્મટ સાથેનું તૈયાર કરી દીધું હતું. નીચે 2 બેઝમેન્ટ કર્યા હતા. ત્યાં બેઝમેન્ટ થાય ને, એટલે સબ બેઝમેન્ટ અને ઉપર બેઝમેન્ટ. સબ બેઝમેન્ટમાં ગુરુ મંદિર કરવું હતું અને બેઝમેન્ટમાં તીર્થંકર ભગવંતોનું બધું જીવન સ્વરૂપ કંઈક હોય, બધાને સમજાય એટલા માટે કર્યું.
અને ઉપર આચાર્યોનો આજ સાધુ મહારાજો બધા સત્સંગ કરે ને બધા અને એમને ઉતારવા માટે બધું આવું બધું વ્યવસ્થા હતી. અને ઉપર સામે એક બાજુ પદ્માવતી સ્થાપના કરવાની એમનો ભાવના હતી અને બીજી બાજુ ઋષભદેવ ભગવાન આદિનાથ. એ તો બે થઈ ગયા પણ પ્રતિષ્ઠા નથી થઈ. તે દેરાવાસી જ્યાં નિત્યાનંદ સ્વામી આચાર્ય ખબર છે કચ્છાથી બધી એમને પ્રતિષ્ઠા કરી. મને બહુ સારી રીતે જાણે છે. નિત્યાનંદજી ધુરંધરજી બધા બંને સારી રીતે. તો એમનો બહુ ભાવ છે. અત્યારે તો ત્યાં ચેન્નાઈમાં છે. પણ મેં આપતા પુત્રોને કહીશું કે જાય તો એક બે વડીલો હોય તો જાય તો. બહુ ઓપન માઇન્ડના છે અને એમને સંકુચિત નથી, ખુલ્લા દિલના છે. આમ દેરાવાસી પણ ખુલ્લા દિલના છે. એટલે આ વિજ્ઞાનની વાત કરીએ બધી એક્સેપ્ટ કરે છે. આ તો સાચી વાત છે, ખોટી કેમ કહેવાય. આટલું કરે છે. એટલે એક દિગંબરના બહુ નથી મળ્યા, સાધુ મહારાજ એક બે મળ્યા એટલું જ. વિદ્યાસાગરજીનું ઘણું ભાવ છે પણ હજુ ભેગા નથી થતા. ઠાકોરભાઈએ બહુ મને વાત કરી. વિદ્યાસાગરજી હજુ એમની ઉંમર તો છે જ સારી છે, મધ્ય વય છે. લગભગ બધા સમાજના મળ્યા. દાદા ભગવાનને આચાર્ય તુલસીજી ના એ નહીં, એ મળ્યા હતા આચાર્ય તુલસીજી વખત નહીં. અને પછી મહાપ્રજ્ઞજીનું પણ સંકુચિત દ્રષ્ટિ શું થાય કે મહાપ્રજ્ઞજી આટલા બધા છે, સાધુ સંપ્રદાય બહુ જ મોટો છે, પરંતુ બુદ્ધિમાં ચાલ્યું જાય છે. આ કાલની બુદ્ધિમાં જો ધર્મ ચાલ્યો ગયો તો આ કાલની બુદ્ધિ આ કર્મને અનુસાર હોવાને કારણે એ ધર્મ અનુસારી નથી બની શકતી. શું કહ્યું? આ કાળની દુષમકાળની બુદ્ધિ, કળીકાળની બુદ્ધિ કર્મને અનુસરનારી હોવાને કારણે સાધુ સંન્યાસી ત્યાગી સંપ્રદાય હોય કે જે સંયમ સંપ્રદાય છે સાંપ્રદાયિક દ્રષ્ટિથી અને જે ધર્મનું રક્ષણ કરનાર છે તે, અથવા તો વ્યવહારના સંસારી જીવો હોય, બંને માટે કર્મશાળીની બની જવાની છે. કારણ કે આ કળીકારના દુષ્મકારના કર્મો છે, મન વાણી અને કાયાના. કયું મન વાણી ને કાયા? કે જે મન વાણી ને કાયા એ કુદરતને આધીન ના રહી શકે એવું અજાર ઈચ્છા હોય વિતરાગ ધર્મને પારીએ, તીર્થંકરોના મતને જ અનુરૂપ એમને વાણી સ્વરૂપે જ રહીએ, એમની આજ્ઞા અનુસાર રહીએ, છતાં એ મન વાણીને કાયા રહેવા નથી દેતી. સાથી કે મન વાણીને કાયામાં ઐક્યતા નથી, એકતા નથી. જેવું મનમાં હોય તેવું વાણીમાં ના આવે અને વાણીમાં જેવું હોય તેવું વ્યવહારમાં ના આવે. પછી એ સંયમ પર્યાયનો વ્યવહાર હોય કે સંસારી જીવોનો વ્યવહાર હોય. સંયમ પર્યાયોનો ધર્મ રક્ષક પ્રમાણેનો બધાને ધર્મ પડાવવાનો વ્યવહાર હોય કે સંસારીઓનો ધર્મ પ્રમાણે જીવન ગાળવાનો વ્યવહાર હોય. પણ બધાને માટે આ એક જ પરિસ્થિતિ છે, જ્યાં સુધી એક સમર્થ જ્ઞાની પુરુષ આ કાળને વિશે પ્રગટ ન થાય. જે કાળ અને કુદરતમાં કુદરત ક્રમે બનવાનું તે કુદરત ક્રમે જ બન્યું કે જે કેવા જ્ઞાનને સ્પર્શ થયેલા હોય એવા જ્ઞાની પુરુષ આ પ્રગટ થયા. અને તે આવા વેશમાં જુઓ, કોટ ટોપી એના આ વેશમાં કેવા જ્ઞાનને સ્પર્શ થયેલા. પરંતુ આ પણ એમનું પણ કહે છે અમારા મન વાણીને કાયા એટલા બધા 360 ડિગ્રી પૂરેપૂરું ઐક્યતાવાળું થઈ જાય એટલું હોય તો જે કેવા જ્ઞાન થયેલું કેવા જ્ઞાન સ્વરૂપે હોય. અને જો કેવા જ્ઞાન સ્વરૂપે રહ્યું હોય આ દેહમાં તો કોઈને હું કામમાં ના લાગ્યો હોત. પરંતુ આ દેહમાં રહી ના શક્યું, 4 અંશ ઊણું હતું, 356 ડિગ્રી આવીને અટક્યું કેવા જ્ઞાન. કેટલું? 4 ડિગ્રી બાકી રહ્યું મારે પૂરું કરવાનું. એટલે 356 એટલે કેવળ દર્શન સ્વરૂપ. એટલે કેવળ દર્શન સ્વરૂપનું 356 અને 360 કેવા જ્ઞાન આટલો નિકટનો સંબંધ છે બેનો. મહેતા સાહેબ આપ સમજ્યા? આજ્ઞા એ ધર્મ અને આજ્ઞા એ તપ. આને કેમ આપણે શ્વાસથી વિલો મૂકી શકીશું? પંડ્યા સાહેબ, અરવિંદા, બોલો નહીં. શ્વાસ વાલો છે કે આજ્ઞા ધર્મ વાલો છે?
भूलता नहीं है धीरज, ये बात हो गई। तो तप कौन सा? આજ્ઞા એ તપ। તો આજ્ઞા આ કાળમાં મન વચન કાયાના ઐક્ય સ્વરૂપ ન હોવાને કારણે આપણે બહારની ક્રિયાથી, અનુષ્ઠાનોથી બધી ઘણી તપ ક્રિયાઓ, ધર્મની ક્રિયાઓ કરીએ છીએ, છતાં એ જેવા ભાવ તેવા ભાવથી એ પરિણમે। સંસારી ભાવ હશે તો સંસારી ભાવથી પરિણમશે, અને મોક્ષનો હેતુ હશે તો મોક્ષ પરિણામી હશે। પણ મોક્ષનો હેતુ, એ મોક્ષના હેતુને કારણે રહી શકવો એટલો સહેલો છે આ મન વચન કાયાની આવા આજના કળિયુગના? નહીં રહી શકે। એટલા માટે જ્ઞાની પુરુષ એવા હોય જો પ્રગટ, એમની કૃપા જો હશે તો કૃપાથી તમને સહજ બની જશે। કારણ કે જ્ઞાની પુરુષ કોણ છે કે મન વાણીને કાયાની કોઈ પણ ક્રિયાના કરતા નથી રહ્યા। એ કૃપા કરતા ભાવથી નથી આવતી। કૃપા અકર્તા ભાવ સંપૂર્ણ પરિણમી ગયો હોય અને મન વાણી કાયાની ક્રિયા સ્વરૂપ શરીર ક્રિયાઓના બધા ક્રિયાપણાના કારકપણામાંથી મુક્ત થઈ ગયેલી હોય ત્યારે જે હોય છે સાહેબ। આજે માં ચંડીપાઠ જગદંબાની પૂજા છે ત્યારે અમારા વેણ નીકળે છે, ભાનુબેન પંડ્યા સાહેબ, સમજા? હવે ચાલો એટલે પછી આપણે સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ચાલુ કરીએ। ના હોય તો પણ મને આ ખાલી વર્ણન કર્યું ને તો મારે અહીંયા હાજર થઈ જાય, મને અંદર મારે ખાલી દેખાય, મને એમ કહું છું, એ મારો સ્વભાવ છે। એટલે આપણે જોવું અને જાણવું એ આપણો સ્વભાવ છે। હવે જોવાય નહીં, દેખાય નહીં તો જણાશે નહીં, એવું છે આપણે। પણ આપણે શું જોઈએ છીએ કે સુરેશ મારો દીકરો છે, 2 દીકરાઓ છે કે દીકરી જે હશે તે, સમજાયું કે નહીં? પણ વ્યવહારથી છે એ આપણે નથી જાણતા। શું કહ્યું? વ્યવહારથી છે। આપ એમના માતા પિતા છો તો દીકરાઓ તો માતા પિતા તરીકે જ લાગે। આ તો બધાને માટે વાત છે, જનરલ સામાન્ય વાત છે। એટલે આ ધર્મમાં વિનય ક્યારે આવે છે કે આપણો વ્યવહારનો વિવેકને સદવિવેક બરાબર જળવાયો હોય તો જે વિનય ધર્મ પણ, ધર્મમાં ભગવાનની આજ્ઞા હોય તોય પણ ખીલવો સહેલો નથી વિનય ધર્મ। એટલે શાસ્ત્રોમાં કહ્યું કે વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે, એટલે ટેપરૂટ છે આખું, અને ધર્મનું પોષણ ત્યાંથી જ મળે છે। ધર્મનું પોષણ ટેપરૂટ એટલે કોઈ પણ વૃક્ષ હોય એનું મૂળ હોય મેઇન, પછી તો બીજા શાખાઓ હોય। તો મૂળ જો રૂટ કપાઈ ગયું તો એ ઉગશે નહીં તમારે, જોજો। સંસાર વૃક્ષ એવું છે, લીલું સાથી રહે। આપણે શક્તિ આપી તરફ કોમ ચાલ્યું એવું બોલીશ નહીં તું, વચમાં બોલી બધું જોઈ સાંભળી લીધું મેં આ કાને એનો ધર્મ કર્યો, જીભે એનો ધર્મ કર્યો, બસ એટલું સમજી લેવાનું। મૂકી દેજો, બધાને આપજો, બેન ભાનુબેનને। નૈમિત્તિકપણાની દાદા કાલે બહુ સરસ આપ ત્યાં વાત કરી હતી, જગત ત્યાં કેલનપુરમાં કાલે થોડીક આપણે રૂમમાં વાત કરી, રૂમમાં એ તો એ તમને ઉગશે, તમે આપતા પુત્ર છો ને, ઉગવી જ જોઈએ તમારે, અને બધાને કામમાં લાગી શકો। અમારી રીતે જ ભાવના છે, ઈચ્છા છે। અત્યારે તમને એ રીતે જ અમે કહીએ છીએ કે તમે જ છો દાદાના, અને વાતો કરતા જાઓ, અને તમારી પાસે છે આજે સમય છે બધો। આખી એક પેઢી સાચવી લો છો, અને બીજી પેઢીને તૈયાર કરવા માટે પછી એ લોકોના બીજા તમે એક છે। મહેતા સાહેબ તો ખૂબ આશીર્વાદ આપે છે, તૈયાર થાવ। હું શૈલેષ મહેતા શાનો, ડૉક્ટર શાનો? ના, એ કશું નહીં, છું ને નહીં, છું ને નહીં, તો પણ એ વ્યવહાર ધર્મથી બોલવાની ક્યાં જરૂર છે? પણ ખરો તો કોણ? જે છું તે એ રહો ને, તો ગમે તે ટાઈમ નીકળશે એની મેં ટાઈમ સામે ચાલીને આવશે। તમને હેલ્પિંગ ડૉક્ટર મળી જ જશે ને તમને કહેશે તમે જાઓ, હું બધું સંભાળી લઉં છું તમારું, અને સિન્સિયર ને હોનેસ્ટ મળશે, જોજો। મારા વચનો યાદ રાખજો।
આને થઈ ગયું છે અને સાંભળતો નથી કશું ને તોય થઈ ગયું છે. એ આંખના ડૉક્ટર છે, બે ભાઈ છે ને, આપતા પુત્ર એટલે આજીવન બ્રહ્મચારી દાદા ભગવાનથી થયેલા. અમને જ ઓસ્ટ્રેલિયા જઈને હવે ઓસ્ટ્રેલિયા બધા ઘણાને સત્સંગ કર્યો, નોર્થ ઇન્ડિયન્સ અને ગુજરાતી બંને. દાદા પ્રભુ માતાજીની કૃપા લેવા હોય તો દાદાને આપણે ઓનેસ્ટ ને સિન્સિયર રહેવું જોઈએ. દાદા એટલે આજ્ઞાધર્મ, બીજું કાંઈ જ નહીં. તો માતાજીની કૃપા બહુ સુંદર રહે. મા કે જગદંબા દુર્ગામાં બહુ સરસ રહે, મા સરસ્વતી બધું જ રહે, એની મેતે રહે. આ તો હું અનુભવથી કહું, મને અનુભવ એ કહું. મને માતાજીની પૂજા કરતાં જરાય આવડતું નથી. આ કરવામાં બેહાડ જ ના આવડે કશું, પણ પૂરેપૂરી પૂજા છે મારી પાસે. દાદાએ તો મુઠ્ઠીમાં આપી દીધેલું બધું. એને કામ શું કહો છો? અને કંઈ દેખાડો કરવા માટે નથી, બતાવવા માટે નથી, કોઈને કંઈ બતાવવા માટે નથી. આ તો આપણો અનુભવ છે તે એકબીજાને વહેંચવા માટે છે. અનુભવ વહેંચે, અંજલિ વહેંચીએ ને એકબીજાને શું કામમાં લાગીશું? બોલને લી તો તારે કોલેજમાં પ્રોફેસર છું તો એટલું તો કામ કરજે થોડી, જે બે ચાર જેમ તૈયાર હોય તો. કે નથી કરતી? ગભરાવું છું? અરે કશું નથી થવાનું તને, એટલે ગભરાય છે નહીં. તારું જેટલું આયુષ કાયું છે એનાથી એક ઓછું વધતું નથી થવાનું. તો ગભરાઈશ નહીં. હવે કાલથી કરવા માંડ, છાની માની કર, જેને જરા ઇન્ટરેસ્ટ પડે કરવા માંડ. એક બે 5 જણને તો તૈયાર કરજા. મને બસ બહુ વધારે જ જોઈએ તમારે. ને પૂછે નહીં ને તો ધીમે રહીને જરા મમરો દબાઈ જવો, પણ દબાવવાનો જ પ્રયત્ન ના કરવું તો ના બસ કંઈ થઈ જશે તો લે અંજલિ ન થઈ જાય. મેં તો સાહેબ તમે કહેતા નથી એને મારું સાંભળે તો ને. એની દીકરી છે, આ પીએચડી કરી, પીએચડી છે, કોલેજમાં પ્રોફેસર છે, કોલેજમાં પ્રોફેસર છે. અને એમના ભાણાભાઈ છે ને, એમની મોટી બેન, આને જ લગ્ન કર્યા જ નથી, પણ મોટી બેન એમનો ભાણો એ તો બહુ બ્રિલિયન્ટ છે. આજે જ નહીં આવશે, આજે આવશે હમણાં. બહુ જ બ્રિલિયન્ટ છે. અને યુનિવર્સિટીના બધા જ એના એટલા ખુશ છે એના પર. એ પીએચડી કરે છે ના, ધોળકિયાના હાથ નીચે પીએચડી કરે છે. અને અત્યારે લેક્ચરર પ્રોફેસર બધું બધા ખુશ છે એના પર, ડિપાર્ટમેન્ટના. નાનો બચ્ચો હતો ત્યારથી દાદાની કૃપા પામેલો. ઊભા રહેશો કે બેસવું હોય તો બેસો ને. કોણ આવ્યું? આ રાજેશ ભાદરણથી? અરે તમે લોકો આવો ને, અહીંયા બેસી જાઓ ને, કંઈ જગ્યા થવું કોઈ. કોણ કોણ આવ્યું છે? રમણીભાઈ આવ્યા છે? કઈ છે? રમણીભાઈ બેસો બેસો, તમે બેસો, તમારે તો જગ્યા જોઈએ. આમ જો ખૂણામાં એટલે તમારે ઈજો કરે તો એને પછી આવવા જવાનું જ રહે એવું જગાએ. અને ત્યાંનું પણ સચવાય ને, આવી સચવાય. આટલો તૈયાર થયેલો છે તો ના સાહેબને સારું પડે છૂટા થઈ જવાનું. પછી એમને જોઈએ તો એમની આખી કમાણી નક્કી કરે આખા વર્ષની કેટલી છે, એ લોકો ભોગવી લેશે એની કંપની. શું કરીએ આપણે? એમને છૂટા કરવા मेरा प्रपोजल गलत है क्या? दादाजी कोई पास नहीं, मैं नहीं समझता. मैं तो व्यवहार समझूंगा, क्योंकि आपको नहीं चाहिए, आपकी मम्मी को चाहिए ना, अब माधवी को चाहिए ना. माधवी है यहाँ? अच्छा, इनको चाहिए ना थोड़ा, वो कान का करना, सर्जरी करना. और आपको लोन लिए है, वो बड़े कमाने वाले से लोन लिए तो उसको वापस नहीं देंगे. अभी तक लिया नहीं है, मगर वो समझ गया. आपने उसको संभाला है, सबको संभाला है. वो देने को राजी 3 ब्रदर्स, सबसे बड़े
बचपन से यहाँ आए तो कम उम्र में मिले थे दादा भगवान को। कितनी उम्र थी आपकी? 18 साल, 18वां चल रहा था। मेडिकल में पढ़ते थे वो, तब मिले थे। पक्के जैन, बिल्कुल जामनगर वासी, पक्के जैन। कच्चे पक्के थे। पक्के कच्चे, पक्के कच्चे थे। यही बात है ना, हमें ये समझना है। हमें व्यवहार में जो धर्म मिला है तो है ही, लेकिन हमारा निश्चय धर्म हमें नहीं है, तब तक तो हम भटकते रहेंगे। यहाँ तक निश्चय धर्म वही धर्म है, तभी तो व्यवहार धर्म सही धर्म व्यवहार से बना रहेगा। क्या विपुल बताया? बोल। अगर निश्चय धर्म हमें प्राप्त हुआ, तभी भी अपना व्यवहार में अपना व्यवहार धर्म सही तरीके से बनता रहेगा। आप क्या बोलते हैं? नहीं, सच्चा बोलो ने। अरे ऐसा बोलने के खातिर नहीं। तू क्या बोलता बच्चा? नहीं, क्या ये बात क्या सच्ची है या गलत? कितनी सच्ची है? 50%? हैं? तू 100%? तू पक्का? तलक से तो नहीं बोलेगा, 100% नहीं बोलेगा। तू तो स्टेनलेस स्टील वाला है ना, चरकाट वाला। कौन छे? कौन? पारस जी? हाँ, तो बैठेंगे। पारस जी आओ ने, यहाँ जगह है। कहाँ गए? अरे कब आए आप? हैं? नहीं, बहुत अच्छे। विनय बहुत अच्छा उनका सबसे। हमारे बंसाली है ना, हमारा वंशराज जी से उनके शिष्य है वो। बहुत अच्छे हैं। उनका भाई बाबूलाल जी है ना, पारस जी के हम बेंगलोर में है ना, वो राजस्थान ट्रस्ट, महावीर ट्रस्ट हॉस्पिटल के ट्रस्टी, और महावीर अपना हॉस्पिटल और देरासर कॉलेज सबका वैसे ही सेवा ही करते हो। सभी बंसाली ब्रदर्स में 6 भाई है, 5, तो 5 में वही सेवा करने वाले। मुझे मेरा कुछ नहीं, व्यवहार किया, सबको बड़ा किया, लेकिन धर्म है लोगों की सेवा। लोक सेवा करो। बच्चे को वही गाद दिया, तो उसका बाबूलाल बड़ा लड़का है, उसके वहाँ जाता है तो बोलता है आप पक्के हैं, आप माल बनाने वाले को भी खरीद लेंगे, उसके हाथ में कुछ रखने वाले नहीं। क्या सौदा करते हो? रोकड़ा पैसा लेके आए, उसका मतलब ये हो गया मेरे हाथ में थोड़ा रखो तो मिलेगा। उसको बोलता है भाई है, फिर भी ऐसा सौदा करता है वो। एक कला है ना, परचेजिंग आर्ट है, सेलिंग आर्ट है, लेकिन प्रोडक्शन करने वालों को आर्ट नहीं आती, क्योंकि इनके पास मार्केटिंग पॉलिसी नहीं है। जो अच्छा मार्केटिंग जो है अच्छा, तो विश्व का सबसे बड़ा पगार वाला बन जाता है। कितना? 100-200 करोड़ रुपया का पगार ले, इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन विश्व में इतना कितना है? भारत में 1-2 देखो लड़की ने ले ली। जो अच्छा मार्केटिंग एक्सपर्ट, वो प्रोडक्शन भी ऐसा ही संभाल सकेगा, क्योंकि प्रोडक्शन करने वाली कंपनी को संभाल सकता है ना। मार्केटिंग उसको बोलते हैं। मार्केटिंग सेल्समैनशिप नहीं है, लेकिन मार्केटिंग में सेल्समैनशिप पक्की आ जाती है। सेल्समैनशिप पे मार्केटिंग नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। एक व्यापार का नियम है। मैं तो व्यापार मुझे नहीं आया, इसलिए मैंने सीखा नहीं, लेकिन दादा भगवान का ज्ञान से इतनी समझ आ गई। क्यों? कि मेरा व्यापार धर्मयुक्त बन गया। ये श्वास का, श्वसन का व्यापार, अभी उसमें मुझे कभी भी घाटा नहीं होना। जो श्वसन से घाटा हो रहा है उसको होने देते हैं, लेकिन मुनाफा जो होना है वो मेरे मोक्ष के कारण होना ही, कि जिनके कारण जिसके काम में मोक्ष आवे आ जावे, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। उसमें क्या जाने वाला मेरा, जब मेरा मोक्ष का हेतु बिल्कुल
100% सलामत है तो दादा भगवान मेरे सर पर है तो ख़त्म हो गई बात। आज्ञा वही धर्म है, आज्ञा वही तप है। क्या समझ जा, क्या समझ जा प्रोफेसर, धर्म है, आज्ञा वही तप है। तू क्या बोलता है? सही बात है, कितनी सही? 100%। अच्छा ठीक है, हमारे गांव से आए सब गांव वाले, ये सब युवक वर्ग है। યુવાનોને વધારે વાત કરું, છોકરાઓને બચ્ચાઓને, કારણ કે એ લોકો તૈયાર થવાના ને બધા. આપણે તો ઉંમરવાળા, હવે આપણે શું કામ થવાનું? અને આ લોકો બધા કામ કરશે. અને આ લોકો એ જ કામ કરી રહ્યા છે. કોણ છે? આવો 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 આવો, જગા હે. કાંતિભાઈ સાહેબ આવો, પધારો પધારો પધારો. થોડાક બેન આમ થોડા સરકજો, આમ થોડા સંકલિત બેસી જજો આમ, એટલે વચમાં થોડા આમ. लेकिन पुद्गल मुक्त हो गया तो चाहे इंद्र को दे सकता है। क्या बताया? वो आज्ञा धर्म से ही मिलेगी, क्योंकि अपने पुद्गल से मुक्ति दिलाता है वो। अपने खुद के मन वचन काया के पुद्गल से जब मुक्ति पाते हैं तभी वही पुद्गल कहीं को अवगाहन की शक्ति उसमें आ जाती है सभी की। लेकिन आज्ञा वो तब बिना नहीं आएगी। क्या दाम जी समझा संजया? आज्ञा वही तप है। तू समझी बच्ची? बैठ। तप तप, अभी आप तप के काल में से निकल रहे हैं, तप पूरा करो। कि शरीर थक जाएगा? बोल, शरीर थक जाएगा तेरा? तू कौन थकेगा? नहीं थकेगा, आत्मा नहीं थकेगा। हाँ, मैं नहीं थकूंगा। आत्मा मत बोलो, मैं नहीं थकूंगा। बोल, मैं नहीं थकने वाला। थकूगी नहीं, थकूगी बोली कि शरीर हो जाएगी। कमाल की, बैठ नीचे। પ્રકાશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ કહે છે, હૈદરાબાદથી ફોન હતો હમણાં થોડી વાર પહેલાં, મને કે દાદાને સચ્ચિદાનંદ. પ્રકાશભાઈ? પ્રકાશભાઈ વોરા अच्छा 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 हैदराबाद वाला। સચ્ચિદાનંદ કહે છે. अच्छा अच्छा जय मैंने सच्चिदानंद की अच्छा है। वो अच्छा तब कर रही है आपके, आप नहीं कर पाते इसीलिए वो कर रही है आपके लिए। हाँ, उसमें थोड़ा शेयर करो उसको, करते हो ना, उसका प्रतिक्रमण खूब करो। अरे प्रभु प्रभु परमेश्वरा, अरे पवन, अरे आप पंखो एक स्विच दबा दो, एक बाकी है। स्विच की बाजू की, स्विच की बाजू की, राइट हैंड साइड की स्विच की बाजू की। तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। बस बस बस, चाल से भाई तने फूल કરી નાખવાના બધા, ફૂલ કરી નાખને બેવ જણ. બસ બસ પતી ગયો. અવાજ આવશે નહીં? હા તો કર કર, તને જે बहुत कृपा है। कांति जी, कांति भाई जैन को पहचाने, बड़े अच्छे वो पंचमाल स्टील वाले थे ना, उनके प्यारे मित्र। शेखावत जी तो बहुत बहुत भाई बनती थी उनकी। और मल्होत्रा साहब ने तो कितना संभाला है इसे, इसने इतनी प्रामाणिकता से संभाला है। मल्होत्रा साहब समझ नहीं पाए उसको, फिर भी जब अलविदा किया तो अच्छा ठीक है, अलविदा भाई जा। कांतिल भाई साहब कौन से जिले के? जिला कौन सा आपका? સિરોઈ. सिरोही? सिरोही वाले? સિરોઈ જિલ્લા. अरे सिरोही वाले तो बामण वाले के हैं। બામણવાડા. ये तो मेरा आराम है। अगर ये आराम मिल गया तो पीछे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज कुदरत ने चांस दिया है तो તારા મંડળી કેમ દાદા શ્રી? હમણાં જ ગોળી લીધી પેલી વિઠ્ઠલભાઈને આ લઉં જ છું, એટલે એનું પેલું ઇન્જેક્શનનું કામ કરશે. આજનો દિવસ આખું કામ કરશે.
પૂછવું હોય તો પૂછો, કોઈને પણ બહેરોમાંથી પૂછવું હોય તો પૂછો, વાત કરો તો નીકળશે. અરવિંદ क्या लेके आयो? આર્ટિકલ પેલો તૈયાર કયો? આ બોલવું એ સિંગલ ગુનો છે, હા, ના બોલવું એ ડબલ ગુનો છે. એમાં આપણી થોડી વાણી સંકલિત થઈ છે. એટલી અદ્ભુત વાણી છે આરી આ ભેગું થયું ત્યારે ખબર પડી કે આમાં દાદાજી આખો મોક્ષ માર્ગ આપે એવા સિદ્ધાંત છે આર્યો. તે પણ દાદા ભગવાનના એ વચનો મોક્ષ માર્ગ માટે ના જ હતા, એ વ્યવહારની વાણી માટે નહોતા, શબ્દથી મુક્ત થઈએ એના માટે હતા. શું કહ્યું? એ દાદાના વચનો હતા અદ્ભુત. એક સૂત્ર છે એ તો સૂત્ર સ્વરૂપે મુકાવવું જોઈએ, પણ કોઈ આપતા સૂત્રમાં આવ્યું નથી. એ સૂત્ર આને કહેવાય છે. બોલવું એ સિંગલ ગુનો છે, ના બોલવું એ ડબલ ગુનો છે. વ્યાપારમાં શ્રેષ્ઠી પુરુષો હોય, નગર શેઠ હોય, છતાં નગરના લોક જેટલા હોય તે દુખિયારામાં દુખિયારાનું પણ એ દુઃખ જાણે, અને એની જોડે વેપાર કરનારા હોય એ બધાના વેપારના બધાનું એના રીતિ નીતિ નિયમો એની જોડે વેપાર પણ કરી જાણે. અને લક્ષ્મીની ધન વર્ષા તો રહેતી જ હોય એને ત્યાં, કારણ કે એ ધર્મનો રક્ષક છે, એ સૃષ્ટિ છે ને, इसलिए तो आपने ऐसा किया. सृष्टि नहीं तो क्या काम आवे. धनावा सेठ मालूम खबर है? धनावा सेठ कैसा था? ऐसा श्रेष्ठी बोलते हैं ऐसे लोगों को जो व्यवहार के पूरे व्यवहार जानते हैं कि मनुष्य जीवन कैसा है और मनुष्य जीवन में कैसे सुख दुख के अनुभव में से सारे मनुष्यों को हमें अनुभव मिलता है. वो दुख में जो अनुभव मिलता है सुख में वो भूल जाता है. इसीलिए सुख और दुख दोनों की पहचान सही ढंग से नहीं मिलती उनको. अगर दुख में मिलता अनुभव वो सही समझ ले तो सुख में मिलता सुख वो सही से निभा सके, नहीं तो नहीं निभा सकेगा. और सुख को निभा लिया महीना, न दुख का पक्ष लिया न सुख का पक्ष लिया तो भगवान का पक्ष हो जाएगा वो, तभी भगवान का पक्ष. सुख और दुख वो पुण्य और पाप रूपी तत्व जीवन में मनुष्य के जीवन में जो काम करते हैं मनुष्य लोग मृत्यु लोक में, ये दोनों जैनों की शास्त्र भाषा में तत्व स्वरूप बताई गई. पुण्य तत्व और पाप तत्व 9 तत्वों भाषा में, वो व्यवहार की भाषा में बताया. वो निश्चय की भाषा नहीं है, लेकिन भगवान की अंतर की निश्चय की भाषा थी. अंतर की भाषा बाहर कैसी आवे? वो शब्द में नहीं आ पाती. वो अनुभव युक्त भाषा है. अनुभव युक्त भाषा केवल कृपा से ही आती है बाहर. क्या? और कृपा का फ्लो बिना मालिकी वाला शरीर से ही बनता रहता है, उनके अलावा नहीं, कभी भी नहीं. मन की मालिकीपन का मालिकीपन, वाणी की अंतरवाचा की बाहर वाचा की मालिकीपन का मालिकीपन और काया की, वो सभी मालिकीपन जब खत्म हो जाती है तब वो शरीर एक सजीवन मूर्ति हो जाता है सबके लिए. तो उन्हें सजीवन मूर्ति से किसी को लाभ नहीं देना पड़ता, वो आपो आप सबको कुदरती न्याय में लाभ बन जाती है. राममोहन भाई एक जगह थी जैसे भूली गया हूँ तो छगनलाल जी. कुदरत ऐसी चीज़ है. ये कुदरत को हमें समझना बहुत ज़रूर है. मानव होने के नाते से हमारे मानव जीवन ऐसे कठिन काल में जहाँ मानव जीवन मानवता से न जिया जाए ऐसी परिस्थितियाँ हैं और ऐसी बनी रहती है. ऐसी समय में ये मानव जीवन में कुदरत को सही ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है.
बहुत ज़रूरी है। क्यों कि वो समझ के कारण हम जो पाछળ હાલે નહીં, દબાઈને બેસજે, પાછળ હાલે નહીં, કેમેરો છે, समझ के कारण हम कुदरत के सभी कायदे, जो लॉज है कुदरत के कायदे हैं, और जो कुदरत के कायदे हैं तो व्यवहार में तो मन वचन काया कि शरीर के नाते के कायदे हैं, क्योंकि मानव स्वरूप में मानवता के साथ हमें जीवन गुजारना है। लेकिन भगवान की भाषा में वो कायदा एक ही है, वो जिसको समझ में अगर आ जाए सही ढंग से, उसका पुण्य ऐसा हो, पुण्यानुबंध पुण्य, तो उसका तो काम ही बन जाए। यहाँ जीवन शरीर के साथ मोक्ष की अनुभूति कर ले, और जहाँ जीवन के साथ, मानव जीवन के साथ मोक्ष की अनुभूति नहीं है, वो मोक्ष की अनुभूति कहलाती ही नहीं, कभी भी नहीं कहलाएगी। शरीर जीवंत है और मोक्ष का अनुभव न मिले तो मोक्ष कौन सा? कल्पना का, धारणा का। हम कहीं ढंग से उसको विचार करें, शास्त्र पढ़े, मंदिरों में जावे, देरासरों में जावे, साधु सन्यासियों की सेवा करे, इससे मोक्ष समझते हैं? नहीं, उससे पुण्य जरूर मिलेगा, जैसे आपका भाव। और ये काल में जैसा बोले कि मन वाणी काया से भाव तो अच्छा करना ही है, लेकिन देरासर में जाते हैं भगवान के दर्शन से ही कहाँ कर पाते हैं। तो क्या किया? भगवान के दर्शन किए यार, हमारे चित्त, हमारे अंतर कहाँ और था। वहाँ जो प्रतिमा जी है देरासर जी में, वो प्रतिमा के साथ साथ जैसी भी प्रतिमा है, वो प्रतिमा के साथ हम एकाकार हो गए थे? नहीं होकर कोई हो पाता, क्योंकि मन वाणी का ऐक्य नहीं है, कैसे हो पाएंगे? वो भाव ऐसा कैसा बनता है रहेगा? हाँ, मन जिसका मजबूत है वो हो सकेंगे। ऐसा मन मजबूत वाले कौन लाएंगे? कहाँ से आएंगे? जो अपने देह के पक्ष वाले नहीं है, अपने खुद के प्रकृति के पक्ष वाले नहीं है, ऐसे होंगे। ऐसे कहाँ से लावे? बाजार में ढूंढते मिल जाते हैं, ठीक है ना? बाजार में बहुत मिलते हैं ना? नहीं मिलते। हाँ, ऐसे नहीं मिलते। तो ये कौन सा मार्केट में मिलते हैं? वो भगवान के मार्केट में मिलते हैं। जो सिक्का काम में नहीं लगता वो भगवान पास से चला जाता है, क्योंकि कोई इसके किसी में रखता ही नहीं। उसके पास आया, लो भाई तुम, उसके साथ डाल देगा और जाओ तुम, डाल देगा, जाओ तो भगवान के पास जाओ। तो आज के सब लोग ऐसे ही है। भगवान उसे अपना लेता है। नहीं, भगवान तो उसे आपका खुशहाल जैसा अपना लिया ही है। दादा अनुभव बोल रहा है, अनुभव बोल रहा है, अपना लिया है। भगवान नहीं अपना लिया। खुशहाल। माणिक विजय जी आचार्य साहब को उन्होंने, ये लोगों ने दोनों गांव, कौन सा गांव अपना? हालापुर। तो 83 में दादा भगवान की परिस्थिति इतनी 83 अमेरिका, अरे 79 सॉरी 79 से फर्स्ट टाइम दादा भगवान कच्छ में गए। उसके आगे नहीं गए थे, लेकिन खिलसी भाई शाह है ना, वडोला वाले, सीनियर टायर वाले, वो ले गए थे, क्योंकि वो मेरे संपत्ति थे। तो उसका बहुत भावना थी दादा भगवान कच्छ बता रहे, लेकिन संजोग आता नहीं था। तो 79 में संजोग आया, तो माणिक विजय जी, उनको कुछ किसी ढंग से दादा भगवान की वाणी का पुस्तक कहाँ से मिल गया, नहीं ऐसे बहुत हुई, भेजा था कि कैसा ही, तो भेजा था, उन्होंने पढ़ा, अरे ये तो सही ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुष कौन? तो जिसको कुछ जानने का बाकी ही नहीं है, जिसकी जाने उपने में सभी जगत जैसा है वैसा ही दिखाई पड़ता है। क्या बताया? ऐसी जानीपन है उनकी। आज का कलयुग का दुष्मकाल का भले जगत हो, लेकिन अपनी जानीपने में वहाँ तक तो हम जरूर
प्रगति कर सकते हैं। इतना ये काल है पंचम काल, क्योंकि वीर शासन है। अगर वीर शासन न होता, वीर शासन के पीछे महावीर भगवान की वीर शासनता का प्रभाव न होता, शासन देव देवियों का, तो ऐसा न बनता। लेकिन वीर शासन है, इसलिए बनना ही चाहिए। तो कहाँ से बने? तो उसका निमित्त कोई, वही निमित्त बिना मालिके वाला। मुझे तो मालूम नहीं ऐसा कैसा हो सकते हैं हम, राम मोहन जी नहीं हो सब पाते ना, हो पाते कैसा मालिकी मन कैसा छुटकारा नहीं पाते उससे? क्या बात करते हो? हाँ, ये तो दादा भगवान के सिवा और कुछ नहीं, कोई बिना, हाँ आज्ञा धर्म से हम रहे तो छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आज्ञा धर्म से दादा भगवान ने तो इतनी छूट दी कि 50% दो तो मैं पूरी तो नहीं छूट दूँ, लेकिन आधी तो दूँ, और 70% रहो तो जाओ पूरी दूँ, बाकी के 30% तो आप कर लेंगे, जाओ। इतने तो ज्ञानी पुरुष थे क्या इससे कृपा वाले, क्या करूँ, करुणा के अवतार थे, तो इतना कर नहीं पाते हम। क्या बोलते राम मोहन जी? आपकी बच्ची आई, संता बहन आई, सुनती है? संता बहन सुनाई पड़ता है? आती है, आने दो। है सुनती है मीना? कोई बात नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, ऐसी बात हो गई। ये ज्ञानी पुरुष, और ज्ञानी पुरुष ऐसे महावीर भगवान के 21,000 साल के वीर शासन में, वो वीर शासन का प्रभाव उनको प्रभावना में न लाने वाले ऐसे समर्थ पुरुष न होवे, तो ये वीर शासन प्रभावना में कैसा आएगा? वो प्रभाव कैसा धर्म के ऊपर होगा? तो 2000 साल का भस्मग्र के असर में कोई कम आचार्य नहीं हुए थे, आचार्य की परंपरा हो गई। तो वो वैसे तैसे आचार्य नहीं थे कि इतनी शास्त्र उनसे रची गई, और बहुत करके बहुत से आचार्य ब्राह्मण परंपरा के थे, लेकिन वो दिल वाले थे। क्या? और दिल वाले थे, उसी नाते भगवान का मत वो हमेरा मत, जो हम भगवान मानते हैं वो हमेरा माना हुआ नहीं भगवान, जो सच्चे भगवान है वो मत। इसीलिए वो वितराग पक्ष के थे। वितराग पक्ष महीना हम भी मोक्ष चाहते हैं, ऐसे थे, ऐसे दिल वाले ब्राह्मण थे साहब। तो ब्राह्मण ब्रह्म तेज, आज 11 आचार्य के साथ मैंने उनको यही बताया, हमारा ब्रह्म तेज यथार्थ स्वरूप से बाहर आने दो, सबको काम में आवे। जरूर नहीं है? बहुत ज़रूर है, क्योंकि वो व्यवहार में सब उसके ऊपर तो हम आधार रखते हैं। व्यवहार है ना, वो तो हर व्यवहार तो व्यवहार रहने ही वाला। तो ऐसे काल में ऐसे पुरुष न होवे, तो पुरुष कौन है? जो मन वचन काया से, मन वचन काया के पुरुष वेदनीय कर्म से, पुरुष स्वभाव से न हो सके और न हो पाए, ऐसे पुरुष न है, तहाँ तक ऐसे पुरुष नहीं हो गए ये व्यवहार में आज के, कभी भी नहीं। ये मार्केट में नहीं मिलते, मार्केट में जो नहीं होते हैं वहाँ मिलते हैं। वो तो भगवान के मार्केट से मिलते हैं, भगवान का बाजार है, व्यापार है, वहाँ मिलेंगे। भगवान का व्यापार क्या था? महावीर भगवान का व्यापार क्या था? 12.5 साल उन्होंने जो व्यापार किया, 27 भवों में जो व्यापार में उन्होंने मुनाफा के स्वरूप में समझ के किया गया था, वो तीसरी भव में ज्ञानी पुरुष से बीज पड़ा, केवल ज्ञान का, जिससे उनके अरे रे आज तक मैं ऐसा ही घूमता रहा, और ये ज्ञान तो आहिस्ते आहिस्ते आया था। ऐसा नहीं, क्योंकि वो समर्थ पुरुष थे, ऋषभदेव दादा के पौत्र थे, आया। तो ऐसी भावना से वो बीज भावित होता होता जन्म पा सके, ऐसा हो गया। क्या करे? लेकिन थोड़ी
बाकी 27 भवों की सुख चाहना की भावनाएं थी वो देवगति में पूरी कर हो गई, लेकिन दृष्टि के साथ हुई। दृष्टि के साथ देवगतियों में देवगति का सुख भी भुगतान हो सकता है और नरक गति का 7वीं नरक में भी वो भुगतान हो सकता है। और नरक गति किसी भी नरक गति में, तो मानव गति में क्यों नहीं? मानव गति में क्यों नहीं? हम क्यों छोटी छोटी बातों में इसे गुमराह हो जाते हैं? एक बच्चा बता ना, जी बताता, उल्टा सुलटा किसी को बात बताता है, आज्ञा धर्म से बात बता सबको, जिसको आज्ञा धर्म है, दृष्टि है उनको। दृष्टि नहीं है तो क्या करे? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आंखें देख पाता है ना? और देखो, आंखें तो वृक्ष दिखाई पड़ता है, हमें वृक्ष नहीं दिखाई पड़ता है, हमें उसके अंदर चेतन स्पष्ट दिखाई पड़ता है, अलग बिल्कुल स्पष्ट। और वृक्ष भी दिखाई पड़ता है, दोनों साथ साथ में दिखाई पड़ते हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़े मुझे? क्यों नहीं? क्यों कि हम निर्णय निश्चय से केवल ज्ञान स्वरूप ऐसे शुद्धात्मा है। हम निर्णय निश्चय से केवल ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा है। कांतिलाल जी अपने इतने बड़े, माफ करो, इतने बड़े सेठ है आप। नहीं ऐसा नहीं है। कृपा उतर रही है सेठ के ऊपर। अच्छी है। शकललाल जी आएंगे। पारस बाजार में बोलता है, उनके पिला क्या बंसराज जी के क्या बने के कौन है बाजार में? कौन थे? साधु थे ना। उसको क्या बताया था आपने? साधु क्या बोलते हैं आपको? नहीं बताओ अपनी भाषा में। नंदू वाली थे, नाम શું है फैक्ट्री નું? हालोल इंजीनियरिंग। हाँ, हालोल इंजीनियरिंग। उनका जो नंदू भाई है उसका बहुत है पक्का। तो हालोल इंजीनियरिंग में बहुत काम किया उन्होंने। अरे बहुत काम કર્યું એને તો, બહુ કામ કર્યું। એ આખું એન્જિનિયરિંગ કંપની જ એમની, એમ જ કહી તો ચાલે, એને આવડે ને બધું। કંપનીવાળાને નફો નહીં મળે, પોતાનો ખેંચી લે, ચાલે। તો આવું છે મહેતા સાહેબ, શું કરું બોલો? માર્કેટમાં નહીં મળે, બહુ રેર, જ્ઞાની પુરુષ બહુ રેર મટીરિયલ છે। એટલે આવા વીર શાસન કાળમાં આવા પુરુષ વીર શાસનને શોભાવનારા, એમના કલગી શાસન સ્વરૂપ એવા ના થાય કે એ એમનું ધર્મનું શાસન નથી, પરંતુ શાસન તો વીર ભગવાનનું જ, મહાવીરનું, પરંતુ એ શાસનને શોભાવનારા એવા અદ્ભુત કેવળ જ્ઞાની પુરુષ, કેવળ દર્શની સ્વરૂપે સારા વિશ્વને અદ્ભુત સ્વરૂપે કામમાં લાગીને ગયા। તે એમનું વિલ તમે જાણો છો? વિલ તમે ખબર છે? વિલ અંદરથી મારી કારી થેલી છે મારા ટેબલને અંદર, પેલી મારી રૂમમાં, એ લઈ આવીશ તું જો, અહીંયા કબાટનું ખૂણા બની પાછું એમ દિવાલને અડીને મૂકેલી છે, આખી લઈ આવો। અગર તો એમાંથી VVIRF નામની ફાઇલ એકલી જ લઈ આવતું, બસ દેટ્સ ઇટ। હવે સમજી ગયો? તો આખી થેલી લાવવાની જરૂર નહીં પડે। તું સમજી ગયો? જો હું વાંચી બતાવું છું તમને લોકોને, ઇંગ્લિશમાં વાંચી બતાવું છું। દાદા ભગવાનની વાણી હતી, કુદરતી વાણી નીકળી ગયેલી, અને એમની વાણીના પુસ્તકો છે, એમાં 1 થી 9 પુસ્તકો એમની હાજરીમાં થઈ ગયા હતા। પછી બાકી એમના પછી બધા, પણ મૂળ 109 હતા જ। બીજા નીકળશે જરૂર, તમારા આપતા પુત્રો કાઢશે, થવાનું જ છે, એમાં ના નહીં, તમારી ભાવના ફરવાની જ છે। પરંતુ અમે એક જ અર્થ ના કરીએ કે અમે તમને જણાવ્યું હતું, જ્ઞાની અને જ્ઞાનમાં ક્યારેય પણ સ્પર્ધાત્મકપણે હોતો જ નથી, આટલું ખ્યાલ રાખજો। જે સ્પર્ધાત્મકપણે નહીં રહે ત્યારે બધું ખીલશે, જોજો। હવે સમજી ગયા? એટલે તમે લોકો સમજો છો કે નથી સમજતા? કોઈ શરમ લાગશે આમાં? વ્યવહારની શરમ લાગશે કોઈ રીતે કોઈ ખુલ્લા વાત થવામાં?
સમજજો જરા. તમારા જ પોતાના હિતની વાત છે, દરેકને પોતાના હિતની વાત છે. આપણને જ્યાં મૌન રહેવા જો લાગે મૌન રહી લો, ના ફાવે તો કંઈ નહીં, એ વધારે ઉત્તમ છે. દાદાએ કહ્યું છે કે ના બોલવું એ ડબલ ગુનો છે. તે અહીંયા સિદ્ધાંત ના સચવાતો હોય ત્યાં આગળ શું કહ્યું? ના સચવાતો હોય ત્યાં આગળ ના બોલવું એ ડબલ ગુનો છે. એ કોના કોન્ટેક્સમાં? કે તમારા આજ્ઞાધર્મના જ કોન્ટેક્સમાં. હવે સમજાવી પડી કે ના પડી? આ ગુનો કેટલાથી થયો હશે કે ના થયો હશે? ના ના ના, એવું તો કે બધાથી જ બોલાતું હશે તમે. હા, દાદા અત્યાર ધર્મના કોન્ટેક્સ્ટથી એટલે કેવી રીતે? એ પછી તને સમજાવું છું. બોલે બોલે તને કાન પકડીને સમજાવું. બધા જ પકડો તમે કે તમે મોટા સાહેબ ને કઈ રીતે મને સમજાવવું હતો? હું સમજાવું ને તમને. તમે મને પૂછો નહીં તો કેવી રીતે હું કહું કે અમે કેવી રીતે અમારો ગુનો છે તે? આ પેલું દાદાનું બિલ વાંચી લીધી યાર. યા હે मुझे तो व्यापार करना नहीं है, फिर भी ऐसी फाइल रख के फिरता हूँ मैं. वितराग विज्ञान इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसके लिए काम करना पड़ता है. देखो, वितराग विज्ञान इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन सूरत, प्रोस्पेक्टस. जैसा यूनिवर्सिटी है ना, ऐसी वो कैंपस है वहाँ. उसके कैंपस की एक मेन ब्रांच किरणपुरी तीर्थ में है. ये 2 मेन ब्रांच काम करेगी. बाकी की आप्तपुत्रों जितनी जितनी एस्टैब्लिश करें उनकी. अभी आज आप बता दिए आपको, वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, आप समझ लो. उनकी मैंने दादाजी क्या आपने बोला आप्तपुत्र जितनी उनकी एस्टैब्लिश करे, उनकी ब्रांचेस. अच्छा मेन कैंपस है, उसकी मेन ब्रांच यहाँ है. पीछे बाकी की ब्रांच होते हाँ? पीछे वडीलों तो है आपके साथ. संघ कहाँ नहीं है? कौन नहीं है? महात्मा सब सारा महात्मा गण है. अगर आप महात्मा के हैं तो महात्मा की नो, वो तो किसी को मालूम पड़े. महात्माओं को अंदर वाले मेहता साहब आप देखो जो आप पूछिए मेहता साहब कि हम महात्माओं के हैं. अंजलि बहन को पूछो. सभी महात्माओं को जाहिर में ही पूछते हैं दादा, और सभी महात्माओं को बोलते हैं कि जो है हृदय में सच्चा बोलो. तो खुला बोलो ना सबको. वही तो बोल नहीं सब ऐसा अभी मैं मेरी हाजिरी में नहीं बोलना. हमारी हाजिरी में वो जैसा है वैसा कहेंगे दादाजी. जब मेरी हाजिरी न हो, सत्संग करो तो बोलते रहो. बोलेंगे दादाजी, जरूर बोलते रहो. जरूर से बोलेंगे, देखो मजा आएगी. जरूर से बोलेंगे दादाजी. देखो ये इसका प्रॉस्पेक्टस है. उसमें स्टडी और रिसर्च जो होगी ये लिखा है. लाइब्रेरी उसकी क्या है भी लिखा है. आर्चिव्स में जो उसका ये वीर शासन में वितराग का जो मटेरियल है, वितराग को जिसको अभ्यास करना हो उसको सब मिलेगा वहाँ. ये है लिखा है. पब्लिकेशंस उसकी जो प्रिंटिंग होगी, बुक्स होगी, वीडियो वीसीडी सीडी जो कुछ होगा सब वहाँ है. और परफॉर्मिंग आर्ट्स वहाँ ऑडिटोरियम बनाया है 140 का क्लोज. जो जिसको ऐसी इंटरेस्ट है वो लोग को आके देख सकते हैं वहाँ. और बड़ा स्टेज है, सब हो सकता है. लेकिन कैसा ऑडिटोरियम, परफॉर्मिंग आर्ट कौन सी? कि जो कला, वो कला से हम हमारे मोक्ष और मोक्ष मार्ग और मोक्ष हेतु सारा व्यवहार जीवन समझ सके इस ढंग से. और समझी क्या हम शंकरलाल जी? इतना ही होगा. वह नाच गान नहीं होने वाले. ऐसे संसार बढ़ावा से नाच गान कोई नहीं होने वाला. आप क्या बोलते हैं? जो भी हो तो अगर व्यवहार जीवन में हमें अहिंसक वीरता बताने वाला अगर कोई मिले, ऐसा कोई भी पात्र, तो जरूर बताएंगे. कौन सी वीरता ऐसी हो सकती है? किसने बताया? नहीं, मुझे मालूम नहीं. विपुल तू समझा? हमारे भादरंग वासियों समझे? भादरंग गांव को आपकी अहिंसा सच्ची बता दो.
लेकिन कैसे बताएंगे? निर्बलता से कि वीरता से? बोलो। निर्बलता से नहीं ना? बोलो। पंजाब वीर केसरी कैसे थे? वल्लभ विजय सूरी जी। जलियांवाला बाग थे, उधर थी गए थे वो लोग। विजय वल्लभ सूरी जी बड़ौदा के, जन्म यहाँ पाया गुजरात में, और गुजराती पंजाब में गए। नित्यानंद उनके, नित्यानंद उनकी मेरे पास मासिक आई है, कल दिल्ली वाले रख के गए, मैं आपको बताऊंगा। उसकी इच्छा है चेन्नई में जाने की। 1-2 हफ्ता पुत्र हो जाए, हम बताएंगे, पूछ लेना हमसे। हम नहीं है तब तक आप जाओ, चौमासा वहाँ है, आप जाना ज़रूर। और दूसरे गाठानी के एक दूसरे हैं जसराज जी, स्थानकवासी के, उनको भी मिलना, वो भी इतना उत्सुक है। दोनों को मिलो, स्थानकवासी वाले हैं, डेरावासी, और साथ में लेना, वडील 1-2 साथ में रखो, इतना करो। आप तो पुत्र है तो वडील ज़रूर साथ में होना, जिससे आपका लघुपन बड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल दादाजी। नहीं, ये तो मुझे ऐसी समझ है। मुझे भी ऐसा कई बार से समझ में आया है। नहीं समझ आया है, लेकिन समझ मेरे पास से कब जाती है कि जब वचन होती है, हाँ, नहीं बराबर है, डाइजेस्ट हो जाती है ना, पीछे देनी नहीं पड़ती। आपको क्या लगता है? यार वही तो बाद में ही तो समझ कहलाती है। ऐसा अंदर में कई बार से उठा है। हाँ, बस करेंगे, आपसे टैली हो गया तो करेंगे अभी ऐसा। देखो इसमें यहाँ एक डॉक्टर पीसी परीख करके है अभी, उसको एम्प्लॉय कर दिया है। वो अधिक कांदीवली रहते हैं और यहाँ महीने में 10-12 दिन आते हैं यहाँ और चलाते हैं सब कुछ ही। डॉक्टर पीसी परीख, उसका बहुत बायोडाटा है। बाकी के सब डॉक्टर्स तो बहुत हैं उसमें काम करने वाले, यहाँ के प्रदेश के सब लोग हैं बड़े बड़े। डॉक्टर पीसी परीख का बायोडाटा इतना बड़ा है, ये सब उनका है, इतनी संस्थाओं का काम। બહુ સારું કામ કર્યું છે એમને. અમીર સાહેબ જોડે અત્યારે અમીર સાહેબને બેનું ત્યાં બેઠા બેઠા કામ અમીર સાહેબ સારું કરે છે. उसका ये है भावावली, उसके गुणातिवाद क्या है और उसका फाउंडेशन का क्या हेतु, कैसा कैसा काम करेंगे वो बताया है। उसका डिटेल्स उन्होंने बताया है, ये सब तैयार किया है। लोकेशन, सभी फैसिलिटीज़ और पीएचडी करेंगे उसका कैसे कितना सब्जेक्ट वो भी बताया। पीएचडी का पदवी वितराग विज्ञान में दी जाएगी, ऐसे है। उसका 20 सब्जेक्ट रखा है, 20। आपको तो एक लाइफ तो कम पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी। अभी जितना आयु कर्म है वो तो बहुत कम पड़ेगा। अब अभी से श्वास का पूरा उपयोग करो, उसका समझ लो। इसीलिए हम बताते हैं वितराग विज्ञान में पूरी निष्ठा से लग जाना। हमें प्रकृति को न देखना है, मेरी निष्ठा काम करती रहेगी। अभी मुझे देह शरीर तो कितना काम कर पाता है नहीं, लेकिन हम यहाँ ऐसे ही काम करते रहते हैं। हम भाव से सब जगह घूम सकते हैं, शरीर तो उसकी मर्यादा है ना, ऐसी बात है। और समझ पक्की हो जाती है तो बहुत काम हो जाता है। उसका एक उन्होंने यहाँ एक दादा भगवान का विल रखा है, यहाँ कुछ आ गया और वो आप जगह समझ गए तो आप तो पुत्र एक श्वास अब गवाएंगे नहीं, और बड़ी लोग भी नहीं गवाएंगे, संघ भी नहीं गवाएगा, महात्मा भी नहीं गवाएंगे। इतना बड़ा है वो। हाँ, आपके जीजा जी को बोलो, आपके भांजा को बोलो, आप बोलो ना, आपका सुनते हैं।
सब फाइल में डाल दिया है ना। माई एम क्या लिखा है? मेरी जो बोलो, मैं 100% निरीक्षक पुरुष, उनकी ये मन वचन काया से जो एम, ये आज के दुष्म काल के, कली काल के युग में सब मानव समाज के लिए है, वो यही है। क्योंकि मेरा 4 अंश बाकी था ना, इसलिए ये बाकी रहा, उसमें मैं बता देता हूँ। उसके अलावा हमारी कोई इच्छा नहीं रही, एक ही इच्छा है। कविराज ने पद में लिख लिया है, हम पद गाते तो बहुत आनंद कर लेते हैं, लेकिन ये दादा की इच्छा, अगर समझ ना हो तो समझ लो बरोबर। इंग्लिश बोलूँ के गुजराती तो आप्तवाणी में है, पढ़ लेना सब लोग गुजराती में। उसकी हिंदी भी हो रही है, अभी छप रही है। टुडे द लाइट ऑफ प्योर सोल साइंटिस्ट्स that has been enlightening is obscured. Today, हे दादा भगवान 79 में नहीं 76 में दूसरी आप्तवाणी जो साल में हुई, मेरे ख्याल से 73 में पहली हुई और 76 में दूसरी हुई, ऐसा मेरा ख्याल है। कुछ ऐसा ही हुआ, उसके पश्चात ही हुई है। उसके 150 पेज तक तो हम पूरे थे, पीछे व्यवहार में लग गए। टुडे बोलते हैं उस समय जब खिलसी भाई शाह हमारे संगपति थे, बरोबर समझो। खिलसी भाई शाह ने पहली दादा भगवान की पुस्तक आप्तवाणी नंबर 1 है, उनके हाथ में नपू गार्डन में, नपू हॉल में प्रकाशित की गई थी। बहुत अच्छी, उसमें सारा विज्ञान आ जाता है। पीछे ऐसी 1 से 9 तक होती गई उनकी वाणी। सारा ईशा यहाँ प्रदेश में गई, वहाँ तक जो हुई वो भी इससे ऐसी रिकॉर्ड हो जाती है, तो वहाँ से लिपिबद्ध करके छापी गई। साक्षात सरस्वती हो गई, जैसी महावीर भगवान की देशना आज होती है और हमें हाजिर मिलती है। और वो तो हाजिर की सभी को लाभ मिली, लेकिन कितनी? 75 साल, 100 साल, ज़्यादा नहीं टिकी उसकी असर। हमेशा कोई भी वितराग वाणी हो, कोई भी हो, वाणी वाणी ही है, उसकी असर, उसके ऊपर काल की असर लगती ही है। व्यवहार जगत में व्यवहार काल की असर हमेशा ही बनती होती थी, रहा करती थी, आज भी बनती रहती है और हमेशा बनती रहेगी। इसीलिए ये व्यवहार काल वाला जगत जो हमें दिखाई पड़ता है, वो जगत सभी कालों में ऐसा ही रहा करता है। ऐसा ही महीना जगत स्वभाव बदलता रहता है। उसका स्वरूप देश, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बदलता रहता है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मानव जीवन मृत्यु लोक में, उसमें बाकी के नाम कर्म, वेदनीय कर्म, आयु कर्म और गोत्र कर्म के साथ ही होता है हमेशा, उसके अलावा नहीं। ऐसी मुझे समझ आ गई दादा भगवान से कृपा से। सुनाई पड़ते हैं कि नहीं? ऊपर से चली जाती। टुडे द लाइट ऑफ प्योर सोल साइंटिस्ट्स that has been enlightening, બતા તો ખરા જ કે નહીં, is obscured, એટલે તે વખત આવરણમાં હતી. માનો સમજવાનું કેટલું ગંભીર વચન છે આ દાદાના વચન, ઉનકી વાણી થી. ટુડે I am the only one fully enlightened man, એટલે he was the one who can enlighten the whole world and the relative side too. I am prepared to answer all the questions of entire world. I am ready to completely answer to 4 billion people of this world. But one who seeks the answer has to meet me. Has anyone met Dada? Bolo? Has anyone met Dada? Nobody can say no. So, yes and no or no yes? Which way I should understand? Yes and no.
पार्शियली यस। वही अंजलि, प्रोफेसर अंजलि बोलनी। Yes or no or no yes. I don't know what is relative, what is relatively no, and therefore in real also partially yes and partially no, obscured. Anjali, please correct if I am wrong anywhere. Please. Huh? No Sharma Sharmi ka soda. Please. I am not here to be pujawa. એના માટે છું નહીં. હું તો બધા મહાત્માઓના ચરણની રજ મેં પહેલેથી ચલાવી દઈ છે માથે. દાદા મળ્યા ત્યારથી સમજી જ ગયેલો હતો. પણ એ બોલવાની વાત છે. મારા ગુણ ગાય કે મારા અવગુણ ગાય? અવગુણે ગઈ શકાય છે અને ગણું કહી શકાય છે. તમને શું લાગે છે? પણ અવગુણ ગવાય એવું નથી બોલતા આપણે, કારણ કે એ રાગ છે ને એક જાતનો. પણ આ જગતના 7 રાગો નથી આવ્યો. ठीक कांति भाई, क्या सुनते आप? सुन लेते हैं मेरी गलत बातें? यही बात हाँ, यही सुनने जैसे तू समझा? अपने 7 सुरों में नहीं आता. रावण इतना था, सारा विश्व और उत्तर भारत और सब लोग उनको जलाते हैं विजयादशमी. क्यों जलाते हो भाई? इतना बड़ा साइंटिस्ट को जलाते क्यों हो? वो साइंटिस्ट था, फिर भी उनके वही भाव में उन्होंने वितराग की इतनी अच्छी भक्ति की. तो एक अच्छा सुर में, वो 7 सुरों वाला सुर के अंदर असल 7 सुरों में भगवान की वितराग भक्ति की, तभी तो उसको बीज गया. वो बीज के साथ भी 7वीं नरक में है. तो दृष्टि के साथ वाला रावण है, इसीलिए तीर्थंकरत्व पदपात प्राणने वाला है. और वही सीता जी जिसको हम बोलते हैं कि उसके ऊपर मोह हुआ, वो मोह हुआ नहीं था, वो ब्लड रिलेशन का राग था. क्या? क्योंकि उनकी बच्ची थी, वो ब्लड रिलेशन का राग था. और अपनी बहन की अपमान करने वाला का तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो कैसा अपमान करूं? तो वो ये है, वो बड़े होने वाला है और हमारे यहाँ निकला है उनको ढूंढने को. तो ये ढूंढने के लिए तो ये उनकी ले जाओ, तो तब मालूम पड़े कैसा है. पूछे मेरे को जीतने को तो आवे, इस ढंग से ले गया. तो वहाँ द्वेष था. तो उस समय राग और द्वेष तो था ही नहीं था. सीता के राग और बहन के प्रति, बहन का अपमान करने वाले के प्रति द्वेष. और द्वेष किसके प्रति होता है? उसके सामने वाले के प्रति ही. सिर्फ ऑर्डिनरी बात के नहीं, राम के प्रति नहीं था, उनको लक्ष्मण जी के प्रति था. साहब, क्योंकि उनके सामने वाले थे, यही थे. नागपाश में उन्होंने सीधा नहीं किया, इंद्रजीत से करवाया. इंद्रजीत कौन? उनका मेघनाथ, बहुत पुत्र थे उनके. बल वाला था और निष्ठावान था, किसी पर नजर बिगाड़ने वाला नहीं था. कहीं राजा लोग अपनी बच्चियों से, जब वो राजा उनको सम्मिलित हो जाते थे, उनकी बच्चियां उसके पर खुश हो जाती थी. मैं आपके सिवा और किसी को नहीं, अरे मेरे तो एक ही है मंदोदरी, मैं नहीं करता, नहीं छूटती. तो मजबूरन उसको शादी करनी पड़ती थी. क्या करें, मजबूरन शादी की हुई, शादी नहीं की जाती. आप क्या बोलते हैं? तो शादी किसको बोलते हैं? जिसको संसार की आदि करा लेते हैं उसको शादी बोलते हैं. क्या करें, क्या करें. ये शरीर इसके लिए तो पाया है, ये समझने के लिए. शरीर की क्या कारण है उसका? शरीर से क्यों रहना है हमें, ये समझ लेना है.
Today, the light of pure soul scientist that has been enlightening is obscured. Today, I am the only one fully enlightened man. I am prepared to answer all the questions of entire world. I am ready to completely answer the 4 billion people of this world. But one who seeks the answer has to meet me. એટલે અગર સજીવન મૂર્તિ को न मिले तो आंसर कैसा मिले? कैसा मिले? उसको पूछा करे तो मिले. पूछा कैसे करे? अपनी अपेक्षा से. हाँ, ऐसा क्यों बोल रहा है? अपेक्षा से. कौन सी अपेक्षा? सच्ची बता रहे हैं? उसको अपेक्षा बोलते हैं कि तो क्या बोलते हैं उसको? अनपेक्षित अपेक्षा. बोल, सच्ची बोल दे. मेरी गलती बता. हैं? एक केवल एक इच्छा है. क्या देखते हैं हमारे सामने? खाली मुंह से भक्ति मत करो, दिल से करो. In fact, one day I am thinking to assemble all the scientists from the entire world. जब उनकी आयु in the 76th year, जब 68 साल की थी और वो 79 साल के हुए थे और 88th बर्थडे हुआ था, उसके 2 महीने के पश्चात विदाई, 3rd महीने, 3रे महीने में. Then I will openly reveal the real facts for the questions such as, ये सब questions. What is this body composed of? सारा विश्व ये जानता है. मैं तो बोलो पंड्या साहब, कौन साइंटिस्ट है इसमें? आप लोग जानते हैं? What is this body composed of? तू जानता है? तू पर नहीं तो सीखना पड़ेगा. सीखेगा तो हमको क्यों बादरण बोलाता है? तो પછી सीखते जाओ थोड़ा थोड़ा. हाँ, आप तो पुत्रों को बोलाओ, उनके पास से सीखते जाओ. उनको विनंती करके, ऐसा तो बहुत कम है, भारत देश बहुत बड़ा है, जल्दी नहीं आ पाएंगे, लेकिन विनंती करके, बादरण गांव है इसलिए आ पाएंगे मेरे ख्याल से. तो महीने में एक दफे बुला लो. एक हफ्ता पुत्रों को कभी 17 में से एक तो करो भाई. अरे इसमें ये तो कहाँ नहीं जाता, उसको बुला लो. भादरण वाले तो लाभ ले लेते हैं, खंभात वाले लेते हैं, नज़दीक वाले नज़दीक क्यों? लेकिन ऐसा कहाँ करते हो आप लोग? सामने जाके विनती नहीं करनी. वडील लोग आ सकते हैं, वडील लोग को कभी बुला लो, बड़ौदा के नज़दीक के. व्हाट इज दिस बॉडी कंपोज्ड ऑफ? क्या छोटा क्वेश्चन है, बड़ा है? बोलने कौन आया? भांजा आया क्या? जीजा जी आए? जीजा जी आप सुनते हो? आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, आप सोचेंगे आत्मा धर्म से, शुद्धात्मा धर्म से. अपना भांजा कहाँ गया? भांजा? अच्छा ठीक है. तो ये बता दो उनको. ये तो आपको नहीं मिल सकती है इंग्लिश कॉल, लेकिन अगर चाहिए तो अक्रम विज्ञान में छपा सकते हैं हम इंग्लिश में. सबको मालूम तो हुए? गुजराती में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा. क्यों नहीं? जो हिंदी में तो सारा भारत में जाएगा और साउथ इंडियन लैंग्वेज भी छपाएंगे हम. जरूर, इतना तो बहुत जरूर है. सारी आप्तवाणियों का सार है ये सब, महात्माओं के लिए. व्हाट इज दिस बॉडी कंपोज्ड ऑफ? दूसरा, व्हाट इज माइंड? किसने सोचा? मन क्या है? मन क्या है सोचा किसने? कहां से? मेरा मन बोलते हैं. उस समय बोलते हैं मेरा मन में ऐसा किसका? मेरा कहने वाला कौन? सोचा. कहने वाला मेरा बोले तो उसका मालक अलग होना और नहीं होना ही. लेकिन सोचते हैं कोई?
अरे नाम की बात जाने दो, मेरा नाम ये है, मैं यही सब, वो तो पीछे मैं वैसा हूँ पीछे आएगा, लेकिन नाम का बोलो ने। कितनी सादी भाषा में बता दादा भगवान ने छूटा पाट दिए, तभी तो आते थे, क्योंकि उनकी हाजिरी थी, प्रत्यक्षता थी, इसलिए प्रत्यक्षता की बहुत कीमत है। क्या बताया? और वही प्रगट जो आत्म ज्योति है उसका प्रागट्य है। प्रत्यक्षता से अगर प्रागट्य न हुआ, वहां तक वो ऑब्सक्योर रहता रहेगा, थोड़ा आवरणों में। हाउ डज माइंड गेट बॉर्न? मन का जन्म कैसा होता है? व्हाट इज इंटेलिजेंस? बुद्धि क्या है? ये दोनों मुख्य है। बुद्धि क्या है? कहाँ किसने सोचा? व्हाट इज प्योर सोल? उसने सोचा? बोलो ना पंड्या साहब, तो क्यों बैठे रहते हो आप? आपका समय क्यों चला जाता है? आए कि नहीं अंदर? हाँ, आए कि नहीं बताया? आइए नहीं बोलो, आए बोलो, दोनों आ गए अंदर। हाउ डज वर्ल्ड ऑपरेट? बेसिक 6 क्वेश्चन दादा ने किए, कितने बड़े हैं ऐसे क्वेश्चन हमारे में से कोई कर पाया? अगर सत्संग में कर बोल देंगे, ये आपका प्रमाण से नहीं निकलेंगे। देखो देखो, शब्दिक निकलेंगे जरूर। अभी अंजलि समझी तो अपनी आयुष्य की कीमत समझ जाओ। सो दिस इज ए कंप्लीट साइंस विच इफ इट रीचेस टू बी हाईली बेनिफिशियल। If we are able to illuminate the path of those scientists, if we are able to illuminate the path of those scientists, which scientists? Scientists that has been enlightening, bija nahi, enlightening. Soul scientists लगी, pure soul scientists that are enlightening. Obscure था ना, तो उसमें वडील वर्ग नहीं आए, महात्मा नहीं आए, नहीं आए, संघ आया ने, ट्रस्टी आया ने, कोई मालिकीपन वाला है, तो आपता पुत्र नहीं आए फक्त, वो तो सबके ऊपरी है। बिना ऊपरीपन से महात्मा को संघ को भेज दिए। चलो तो बोलते हैं कि यार डांट से बहुत हो मुझे, हमसे हाजिरी में डांटो तो अच्छा नहीं लगता। अभी मैं क्या बताऊं? मेहता साहब बोलो ना। नहीं हाजिरी नहीं, मैं हाजिरी बात व्यवहार में तो अच्छी है, व्यवहार से अच्छी बात है उनकी, लेकिन अगर उनका निश्चय पक्का हो गया है तो उसको असर में नहीं आएंगे। वो असर आती है वहाँ तक कच्चापन है, वो पक्का कर लो ना अपना। मौका मिलता है ना, संजोग मिल जाता है ना, संजोग। अरे भाई मुझसे मिला तो मुझसे थोड़ा डांटो, अगर मुझे बोला तो मैं आपका प्रतिक्रमण कर लूँगा, मेरा धर्म वो होगा। डांटना आपका व्यवहार धर्म है, वो कर लो, तो दोनों का काम तो बन गया कि नहीं? वैसा बोलो ना। बरोबर दादाजी, हम तो बाधा रखते हैं कि डांट मिले तो कृपा मिली, वो उस दिन। अभी तुम ऐसा अपना आपका अकेला नहीं बोलो। मैं तो अकेला, मैं तो इसकी फाइल एक का ही बोल सकता हूँ। आप 17 एक है और एक 17 है, 18 राधा 19 हो के वो कहानी भी है आपके साथ। If we are able to illuminate the path of those scientists, and the scientists would convert their knowledge in their lexicons, and the scientists would convert their knowledge in their lexicons, in each everybody mind and speech bodies lexicons. एवरीबडी बॉय माइंड स्पीच बॉडी तो है ही, उनकी तरफ से अनुभव प्रमाण से लेक्सिकन्स बोलते हैं। लेक्सिकन शब्द बहुत बड़ा रखा है, क्योंकि तो डॉक्टर है ना, बहुत बड़ा रखा है लेक्सिकन से जो वर्ल्ड में कोई उसके ऊपर छेका नहीं लगाएगा। अनुभव प्रमाण अंजलि समझती है। सो एज टू मेक इट अवेलेबल टू ईच एंड एवरी होम। If we are able to illuminate the path of those scientists, and the scientists would convert that knowledge in their lexicons so as to make it available to each and every home. Not every महात्मा तो है ही, हम एक दूसरे के सहायक है,
लेकिन every home. It is my idea that this science has to be made available in every nook and corner of this world. It is my idea. निरीक्षक इच्छक का क्या बताया? ऐसी इच्छा हो सकती है महात्माओं की? नहीं ना। लेकिन महात्मा कैसा करे? मैं घर हूं ना, मेरा घर कहाँ? मेहता साहब थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा पंड्या साहब के साथ। हाँ, ये चंद्रकांत नहीं निकलता, नहीं निकलता। तो जैन समाज को तो जगाओ। It is my idea that this science has to be made available in every nook and corner of this world, and everyone in the world has to have a fill of happiness and peace. वो व्यवहार से बोलते हैं ना, क्योंकि व्यवहार पूरा विज्ञान है ना। व्यवहार विज्ञान नहीं तो व्यवहार किसको व्यवहार बोलेंगे आप? व्यवहार तो मन शरीर से है, मन से है, वाणी से है और शरीर से है। तो कौन से व्यवहार को अब व्यवहार बोलेंगे? बाकी के व्यवहार नहीं है, वो भटकनपन वाला है। वो तो पुण्य पाप की कराता ही रहेगा। अच्छे जब मिलेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे जो वहाँ तक, नहीं तो कभी एक कुसंग मिल गया तो गिरा भी देंगे कभी। वो तो ऐसा जहाँ तक हमें दृष्टि नहीं मिली वहाँ तक, दृष्टि मिलते ही हमारा पथ उजाला करने वाली दृष्टि से हमारा पथ सही बनता रहेगा, मोक्ष पथ, मोक्ष मार्ग। Whatever you may term, बोलो, my intention, my idea, or my inner force, this is it. Is it? That's it. क्या राम मोहन जी ऐसा है? मैं तो ये इंग्लिश देख के खुश हो गया उनका। इसी पर ही कितना काम में लगे। अभी तो 1 ईयर के हमें वडील लोगों को लगा कि पहले 1 ईयर रखो ना। अरे क्या 1 ईयर है? पैसा किसके लिए रखने वाले हैं आप? साथ में ले जाने वाले? उसको ज्ञान दिया है मैं 94 में, लेकिन बीच में वो तैयार थे संघ के लिए काम करने के लिए, लेकिन हमारा संयोग नहीं आया था। हमें ऑब्सक्योर थे ना सब। हमने बहुत कोशिश की, मोसराज जी के वहाँ ऑफिस दी, जगह दी, फिर भी नहीं आ पाए। क्यों? कि ऑब्सक्योर स्टेट में थे सब। हमें तो नज़र में आ गए थे पक्के कि करो। उसने ही रिटायर होके कि तो क्या करूँ भी, तो जो मैंने मुझे ऑफ़र बहुत मिली, ऐसे लोगों तो बहुत ऑफ़र मिलेगी, तो उसको क्या करना है? उसको कोई बच्चा नहीं है, प्रजा नहीं है, और पक्के प्रणामी संस्थादाय के वो बहुत प्यारे हैं। अमेरिका गए तो 2000 लोग जमा हो गए थे जब 94 में मेरे साथ आए थे तब। और इन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, उसमें दादा भगवान का क्रम विज्ञान का सारा अंश रखना था। तो मैंने कहा आप और अमीन साहब को करो, मैं आपको थोड़ा अपन बात कर ले, चलो तो आप विकसाओ, आप लोग ऐसे है तो तभी हुआ था। तभी पीछे अमीन साहब ने फाइनल हुआ और बाकी बैठा दिए सब कुछ। तब ये आया तो KPS राव जो है साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी वाले के रिटायर्ड एक्स प्रोफेसर और उनके मेन चीफ एडिटर सारे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म के, वो रिटायर होके भी पेंसिल्वेनिया में है। वो मुझे मिलेंगे स्पार्टनबर्ग में, और ये सभी इसमें पीसी पर ही खाएंगे। मीटिंग रखी है। मेरी तो इच्छा थी कि कई वडील हो जावे, लेकिन वडील लोग निकल नहीं पाते, तो थोड़े जल्दी निकले ना आता है तो कोई बात नहीं थी। जैसे जैसी परिस्थिति व्यवहार ऐसी बात है। दादा भगवान ने मन, वाणी और काया उसके प्रति दुर्लक्ष्य भी नहीं रखा और लक्ष्य भी नहीं रखा। क्या बताया? आपका धर्म आपको संभालना है, पर मैं क्या कर सकूं? मेरी समझ ऐसी, तो उसमें मैं कर नहीं मुक्त कर पाता, तो मैं क्या करूं?
अरे एक का हो तो भी क्या करूं मैं, बताओ ना। और जिसको पसंद नहीं हो तो बोले तो मैं क्या करूं? बोलो ना मेहता साहब, बताओ ना साहब। बस यही बात है। तो सबसे कितना अच्छा प्यारा मार्ग है दादा भगवान का। हम अगर मन वाणी और काय के पक्ष में रहे तब ये में ऐसे अवडव में रहेंगे, ऑब्सक्योर्ड रहते जाएंगे, ऑब्सक्योर्ड आज्ञा धर्म मिलते हुए फिर भी तब नहीं बनता ना अपने अंदर का। तब तो सबको मिलता है, सबको मिलता है, श्वास श्वास में तब मिलता है। कच्ची माड़ू को तब नहीं मिलता, बहुत तब मिलता है। समझ गया? तू तब नहीं करता। बोल बच्चा बोल, कि खाली गाड़ी चला के बस पैसा बना देता है। क्या करता है? खोता है ना विपुल प्रोफेसर, बिल्कुल। ये लोग को समझाना, तब समझा। तब महीना शरीर को कष्ट नहीं देना, उसको तब बोलते हैं। क्या करते हो? शू कर छे मारे नहीं करवी मन तो अरे आओ संजोग हूँ शू कम जवा दू, तू त्या बेस तप थवा दे। अल्फोंसो काची केरी आईस पकवा दे।